So, good evening, everybody. I'm formally welcoming you to this session of Master Key System Mental Exercise. We are on chapter number 18. And here he is talking about two basic facts of life. There is a universal existence and there is an individual existence. The individual existence lives in an environment. So, his body is his environment, his family forms his environment, the house he stays in, the workplace, the city, the roads, the buildings, the transportation modes which he uses, they constitute his environment. The air he breathes, the water he drinks, the food he eats, they constitute his environment. And each one of us has a different environment. But where is this environment coming from? This environment is being generated by us, created by us individually. Each one of us is creating his own environment. And where are all these individuals coming from? Why are there so many people on the planet, so many trees, so many plants, so many birds, insects, fish, reptile, so many mountains, rivers, oceans, uh, continents? Why are there so many? Because all of them are coming from a very big power, a universal power, which is called the universal mind. That universal mind is a very big source of matter and mind to the individual. And using that matter and mind from the universal storehouse, each individual can create his world. Each individual can manifest what he wants to have in his world for himself, for his family, for his friends, for his community. So what is happening here? We are basically existing in three dimensions, broadly speaking. One is the world dimension, matter dimension, material dimension. Second is the mind dimension. And third is the spiritual dimension. What is the difference between three of them? The spiritual dimension, everything is infinite. Knowledge is infinite, energy is infinite, time is infinite, life is infinite. In the mental dimension, all that is there is between finite and infiniteness. So the mental dimension can never become infinite. The mental dimension will always be between finite and infinite, between some small number and a very big number. But the material world will be 100% finite. So the material world is present in terms of space and time, in terms of length, breadth, height, and time. So the world moves through matter and time. Now, if we want to manifest something in the world outside, so the mind power has to be used. And the mind power can be anywhere between 0 to infinity. So we must know how to increase our mind power. If you want to create bigger and bigger things in the world outside, we need to develop, cultivate, nurture a mind of a very high intensity, very high quality, very high quantity, very pure nature of mind, very expanded mind, very broad mind, very silent mind. A mind which is silent has tremendous power. A mind which is in disturbance has very little power. So the whole game here is of increasing the power of your mind and to connect with the universal so that the individual can draw energy, matter, power, knowledge from there and use it in the individual world to create a better, sustainable world, to create the objects of his desire at any scale. He can go up to any level as he desires. So to do that, we will do this exercise for 15 minutes. The exercise may seem difficult, but it is not actually difficult. So I will explain you the exercise and will ask you whether is it clear. If you have any questions, feel very, very comfortable in asking.
I can explain 10 times to you so that you grasp that meaning. Once you grasp that meaning, then the magic will start in your life with practice. So the first thing to be understood here is that yeah, you have to today think about, meditate on your power to create. Supposing I ask you, do you have the power to create? What will you reply? Yeah, say Benzi or Parag, one of you. No? Okay. Sir, Uh, one doubt. When we are talking about the fifth dimension, uh, material, mind in infinite power and matter and time. So, whether this exercise will making coordination between the mind, infinite mind, and the material mind to create the what I want to do or what I want to create my world yes, like that is yes, like that is exercise is there. yes, So sources I'm available and my my mind thinking and I'm requesting universe to the give me the infinite knowledge which can expand and I reach to my goal. Is it yes, the way? yes. Thank Let you, me sir. give you an example. Hmm. Supposing there is energy coming to your house, it is coming in the form of 220 volts AC. But as you move towards the power generation house, you will find there is a transformer which is bringing down something like, say, 6,300 volts to 440 volts. And there is Okay. another transformer outside your house which is converting that 440 volt into 220 volts and giving it to your house. And Okay. there is a transmission line coming from the power generation station at 31,000 volts. And it is coming from a far distance through high transmission towers and cables. It is entering your city and it is connecting to your 6,300 volt transformer. Mm. So three different frequencies available to me to create my world. Yeah, they are not frequencies, they are voltages, electrical power measurements. Power. Okay. So What is now, between difference? sorry, What is difference between frequency and power? What is means I didn't uh, understand because okay, some confusion in my mind. maybe I'll tell you. Frequency is the number of times some object goes through changes. Okay. Supposing if I tell you what is the frequency of rotation of the earth. So the frequency is one in a day. In one day, the earth will rotate once. Acha, what is the frequency of the earth rotating around the sun? So around the sun, the earth rotates once in a year. Okay. This is one way of understanding. When we have a radio set, we tune to different frequencies. Each channel has a frequency. So that audio information is fed onto a particular frequency and transmitted. So when you tune your radio set, you tune to that particular frequency and the sound comes out. That is the Oh, frequency. Voltage is that there are certain devices, say probably your mobile phone, it is getting charged at 5 volts. There are other devices in your home which might be getting charged at 12 volts, could be a laptop. okay. There would be another device in your home which works at 220 volts, say your tube light, your fan, your microwave machine. So Okay. different voltages, different powers are needed for different devices to run. And Yes. depending on the extent of power they are consuming, that much amount of work they can do. Yes. Yes. Right? Now I clear. So
That, So since we are discussing manifestation, if my power to manifest is low, I can only manifest low things. If my power to manifest is high, I can manifest high things. Now, where do I manifest? How do I manifest? I manifest using my body. My body is the instrument through which my mind works and manifests and creates. Now, how do I do it with my mind, with my body? Use of two hands, use of two legs, use of my mouth. I can speak, I can hold, I can move. So these are organs of action by which I can create something new in the world outside. Now, yes, these mouth, hands, and legs, they are connected to my mind. My mind is giving them instructions, my conscious mind. My conscious mind, like the transformer scenario which we were discussing earlier, is connected to a subconscious mind, which has got a bigger power than the conscious mind. My subconscious mind is connected to a bigger power, which is the universal mind. And if you go further back, my universal mind is connected to a even more bigger power, which is the infinite mind. Now, what is happening is, as it is flowing down into my body, the power content gets on reducing. Why? Because I am an individual. I don't have that high capacity of handling high power. I will burn out. My nervous system will fail. So what is done is, by practice, by abhyas, we build our mental muscles, we build our mind muscles, and we increase the width of the pipe. So let us come back to the generating station and the supply to your house. So okay, every stage from the generating station till my house, the power is being stepped down. It is being brought to lower and lower levels so it can safely be transmitted in the city, can safely reach a person's house, and nobody dies of shock if there is an yes, accident. sir. Okay. But in Yes, this case, I can expand my mind's capacity. My connection between my infinite mind to my universal mind, say, is of a 100-inch pipe. And my universal mind to my subconscious mind, say, is 10-inch pipe. And my subconscious mind to my conscious mind is 1-inch pipe. So my capacity actually becomes 1 inch because that is the smallest pipe I have in my system. yes, So what I need to do is, by practice, by mental exercises, by concentration, meditation, and absorption of the mind, by practicing different kinds of, let me say, meditation. tapasya, mental work, I can increase the thickness of these pipes. So first, what I can do is I can make the infinite to universal mind, which has a 100-inch capacity, a 1,000-inch capacity. And then which is going from my universal mind to my subconscious mind, it is 10 inches, I make it 1,000 inches. The subconscious mind to the conscious mind, which was 1 inch, I make it 1,000 inches. And now my body ends. So now this energy, which the individual is pulling from the universal and beyond, will come at a very high intensity. Because with practice, I have been able to increase the dia of that pipe through which that energy is flowing. So when it reaches the conscious, when it reaches the world outside, my creation power will be at least 100 times more than the normal public. Because the normal public still has those thin pipes, 1-inch pipe, 10-inch pipe.
whereas I have transformed my pipes. I have increased the capacity of my pipes to carry energy and power. So my transformation ability has shot up 100 times more than others. So then the others will say he has special powers. He has mystic powers. He has siddhis. He has vibhutis. He can do magic. There is no magic in this. There is simply an exercise of building up the mental muscle, the mental pipe thickness you are increasing. Are you following this, all of you, what I'm saying? Yes, sir. Yeah. Anybody who is not able to follow can kindly ask a question. Sai Ram Viren- Anybody? No? Okay. So what he's saying now in this exercise is, I will just read. He says, concentrate upon your power to create. Put your mind on your power to create. You might not know whether you really have the power to create. But even then, start thinking about it. Is it clear? You have to think about the power to create. And then you have to think about seeking insight, seeking the power to see what others are not able to see, to have the power of perception. Perception means deep perception, an X-ray like vision. So you can see through your senses what others are not able to see. Others will be looking at it all at a superficial level. But you, because you have worked on your power to create, power to have insight, you will be able to see far more deeper. There are 7 levels at which one can see. There are 7 levels at which one can create. So here he says, you just look at your power to create, look at your power to find insight, seeing the invisible, and look at your power to perceive, to see, hear, smell, taste, and feel the touch. And then you will find that your abilities have started going up. You are operating at a very high level. So this is the first one. Then he says, now think that the man who is physical in shape, whose body you are seeing, he is living and he is moving. And his sustenance is coming from the air which he breathes. All of us breathe air. So now you think of a man who has a body, who is physical in shape, and he takes air, oxygen, prana to survive. So all people who are surviving, all animals who are surviving are actually taking in air, oxygen. And then he says, now think about a spiritual man. Think about a man who has infinite power, infinite knowledge, and infinite life. So spiritual is a domain where everything is infinite. So the knowledge of that man is infinite, the power, the energy is infinite, his life is infinite. Life infinite means he is not born nor does he die. He is ever present. Now think of such a man. So number one, we thought of a man who is physical in the real world, living on oxygen and air. And second, we are looking at a spiritual man who is living in a world, in a creation where knowledge is infinite, power is infinite, and life is infinite. Then you will realize that that man who is in the spiritual world is actually living on spiritual energy. He is not living on air. Air is physical, but the spiritual is not physical.
So there he's surviving on some kind of a subtler energy, which is the spiritual energy. And in the physical world, man gives birth to another man. That means parents give birth to children. And the flow continues through material means. Similarly, in the spiritual world, the spiritual man continues using spiritual means. So, if you reach the spiritual world, you will be able to use those powers to bring something into your physical real world. But if you are living only in the real physical world, you have no access to the infinite power of the mind, the infinite energy, the infinite knowledge. You will not be able to create big things. So, if you have to create big things, you have to reach the spiritual energy, which is infinite, and bring that energy down from the mind, from the body into the world outside. And then you will have big creations, infinitely big, massively beautiful, absolutely creative creations. So for normal life, you be in the physical world. But if you want to have a super normal life, then you have to figure out a way of reaching the spiritual world, tapping that energy, tapping that knowledge, tapping that life, and bringing it into reality on planet Earth. This is the exercise. Any questions on this? No, sir. I think there will no question remain now. Okay. All the doubts has been cleared in my Okay. Sushil, what about you? his mic Very is well on. said, sir. Very clear. Okay. Surinder, did you get it? Yes, sir. Okay. Benzi, did you get it? Okay. Guna, what about you? Yeah, I got it. Sorry, I was on mute. Okay. So how do we do the exercise? You go to a room, close the door where you are alone, sit on a comfortable chair or on a bed, wherever you feel comfortable body-wise. And that position which you can hold for some time, for 15 minutes without moving. So the posture must be steady and comfortable. Close your eyes and visualize this, that you are first looking at your power to create, then you want to seek insight, how to make it possible, and you are developing the power of perception so that you can see many, many layers inside into the reality. And then you look at a physical man who lives in a world breathing air. And then you look at a spiritual man who lives in the world of spiritual power where knowledge is infinite, power is infinite, life is infinite. And the man in the physical world grows through physical means, and the man in the spiritual world grows through spiritual means. So if we can at the spiritual level connect with that infinite power, infinite knowledge, and bring it down safely through our mind into the physical world outside, then we will be able to create awesome, magnificent, unbelievable things at a scale and size at which mankind has never seen before. So, this exercise is to help you connect to the spiritual man, bring the power into your physical man today, and create, manifest, produce wonders. Yeah, so please be seated. You may start. This is for 15 minutes. When 15 minutes are over, I will inform you, and then we will take some feedback. So please start. That's all.
कौन शेयर करना चाहेगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा? संजय जी, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। हाँ प्लीज करो। मैंने मैंने ये फोकस किया, कंसंट्रेट किया महाअवतार बाबा जी के एनर्जीज पे। ओके। मेरी नज़रों में वो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन है और उनमें बहुत स्पिरिचुअल पावर्स हैं। हाँ तो मैंने उन पे फोकस किया कि जो उन्होंने एनलाइटनमेंट लेके जो पावर्स समाज के भले के लिए वो यूज कर रहे हैं, हाँ। उससे मैंने कनेक्ट किया अपने आप को। हम्म, और वो इमोशनल कनेक्ट पहले से ही था। हम्म, मैं उनको बहुत मेरे दिल में बहुत डिवोशन है, तो मैंने उनसे कनेक्ट करके कि वही चीज जो वो सोसाइटी के भले के लिए कर रहे हैं, हम्म, वही पावर टू क्रिएट मेरे अंदर आ जाए ताकि मेरे से भी कुछ अच्छा काम हुए। ओके। ये करके मैं इसी थॉट पे फोकस करके सॉर्ट ऑफ मैं प्रेयर ही कर रहा था कि जिस तरीके से आप कर रहे हैं उसी काम का मैं एक छोटा सा हिस्सा बनूं और ये एनर्जी से कनेक्ट हो जाऊं, क्योंकि बड़ा काम करने के लिए बड़ी एनर्जी चाहिए। ओके। उसके तो बाद क्या दिस इज हुआ? आई वाज डूइंग। बस एग्जैक्टली क्या हुआ है तो नहीं बोल सकता, लेकिन बस मैं कनेक्ट कर रहा था और प्रे कर रहा था। फिर बाद में जैसे टाइम कंप्लीट हो गया, आपने कह दिया, तो आई जस्ट ओपन माय आईज। बट ओके। ऑल द टाइम आई वाज इन सॉर्ट ऑफ प्रेयर विद द हायर एनर्जी टू कनेक्ट विथ मी एंड increase my power. This is what I could do. ओके। I may be wrong. I don't know how much if I did it correctly or not. I don't know. But मैं यही कर रहा था। ओके। आपको वो हाई एनर्जी या वो हाई नॉलेज एक्सपीरियंस हुआ क्या? इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट लाइफ, इसका एक्सपीरियंस हुआ क्या? एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन कन्विक्शन था कि महाअवतार बाबा जी ऑलरेडी, उनकी मेरे को स्टोरी पता है कि उनको, मुझे पता है कि ही इज ऑलरेडी एनलाइटेंड पर्सन। तो इन अ वे आई न्यू कि मैं एक इनफाइनाइट एनर्जी से कनेक्ट करने जा रहा हूँ, उसके लिए मेरे मन में कन्विक्शन था। लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि हाउ बिग ही इज और व्हाट लेवल ही इज डूइंग द वर्क, वो फीलिंग नहीं आ पाई। हाँ, कन्विक्शन जरूर था, जो कर रहा हूँ वो मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस एनर्जी से कनेक्ट हो रहा हूँ। सो देयर वर टू थिंग्स आई वाज वेरी श्योर अबाउट। एक तो कन्विक्शन था और दूसरा डिवोशन था। ओके। मन में श्रद्धा थी और ये मालूम था कि हाँ, मैं जहाँ पहुंचा हूँ, जिस दरवाजे पे मैं खड़ा हूँ, वो दरवाजा बहुत बड़ा है और वहां से मैं कुछ लेके जाऊंगा। देखिए इसमें जी। एक डिविएशन हुआ। हम लोग हाँ का जी। ये कहना था कि हमारे तीन डायमेंशन है: फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन। फिजिकल हम्म। डायमेंशन जो है वो फाइनाइट है, मतलब छोटा है। हम्म। मेंटल डायमेंशन जो है वो फाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाता है। और जो जी। स्पिरिचुअल डायमेंशन है वो 100% इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट नॉलेज, हम्म। इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट लाइफ, वहां सब infinite। जी। तो इसमें कोशिश ये करनी थी कि हम अपने अंदर के स्पिरिचुअल मैन को एक्सपीरियंस करें। हमारे अंदर जहां पे इनफाइनाइट पावर है, जहां पे इनफाइनाइट एनर्जी है, जहां पे इनफाइनाइट हम्म। नॉलेज है, जहां पे इनफाइनाइट लाइफ है, उसके साथ कनेक्शन करें, अपने अंदर का कनेक्शन। ओके, ओके, हाँ। समझ गया। हाँ। मतलब रादर देन मैं बाहर कनेक्ट करने गया, वो हमारे अंदर ही कनेक्ट करना था। जी। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे हैं। एक नया मातार बाबा लाने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे अच्छा। अंदर ही वो असीम ऊर्जा, असीम शक्ति, असीम ज्ञान है। लेकिन हम्म। उसकी अवेयरनेस तुम्हारे में नहीं है, तो वो अवेयरनेस जागृत करने के लिए एक्सरसाइज। ठीक है, मैं अभी आपने बताए हुए गाइडलाइंस में मैं रात को रिपीट करूंगा। हाँ। जिस तरीके और से आपने बताया, मैं उसी तरीके से इसको लेके जाऊंगा। ठीक है, आई हाँ, गॉट इट। और ये भी नहीं बोलना है कि मैं आपका छोटा हिस्सा हूं, क्योंकि एक ओके। ही है। उसके तीन डायमेंशन है बस। उसको हम तीन एंगल से हम्म। देख रहे हैं। तो छोटे हम्म। बड़े का कोई सवाल नहीं है, यहाँ पर कोई डुअलिटी नहीं लानी। ओके। ठीक है, क्लियर? ठीक है। लेकिन मैं उनसे ही मांग सकता हूँ ना, बिकॉज मेरा श्रद्धा वहां पे, मांग तो उन्हीं से सकता हूँ।
नहीं, फिर तुम मांगने की बात सोच रहे हो। मांगना नहीं है, बनना है। ओके। तुम्हारे तुम्हारे अंदर ईश्वर है कि नहीं है? हाँ, है ना। हाँ, तो वो ईश्वर क्या माँ अवतार बाबा जी हैं? मेरे लिए तो ईश्वर का रूप है वो। ठीक है, आप नहीं, जैसा समझाएंगे वैसे मैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर लूंगा। मैं कह कोई रहा दिक्कत नहीं, हूं कि मैं तो वही मान रहा हूँ। नहीं नहीं, तो वो बाहरी है, वो प्रकृति में है। ठीक है। उनको तुम्हारी इंद्रियां देख रही हैं, सुन रही हैं। वो वो एक प्रकृति के अंदर एक ऊंचे स्थान पे बैठे हैं। ठीक लेकिन है। जब हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात होती है, तब हम हम्म। लिमिटेड प्रकृति की बात नहीं करते हैं। ये जो क्रिएशन है, ये लिमिटेड है। ये जो हम्म। मैनिफेस्टेड सृष्टि है, ये लिमिटेड है। और इस लिमिटेडनेस के अंदर में महाअवतार बाबा है। हम्म। हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूटनेस की। वो भी हमारे अंदर है, लेकिन हमको पता नहीं है। हमने उसकी कभी अ, अनुभव नहीं किया, उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, उसको टेस्ट नहीं किया। तो वो कब कर पाएंगे अनुभव? जब हम उसको जागा हुआ देखें। समझ में समझ आ गया, मैं अपने अंदर के इनफाइनेटनेस को फील करूंगा। आई गॉट इट, हाँ कि मुझे करना हाँ क्या है कि वो फील करना है। हाँ, ठीक है। अपने अंदर के इनफाइनाइट पावर टू क्रिएट, अंदर के इनफाइनाइट एनर्जी जिसके माध्यम से क्रिएशन हो, अंदर के इनफाइनाइट नॉलेज जिसके माध्यम से वो एनर्जी का प्रयोग हो, अंदर में वो इनफाइनाइट लाइफ। तुम्हारी जो आत्मा है वो अनंत है। वो ना पैदा होती है ना मरती है। तो उस आत्मा का अनुभव, इनफाइनाइट लाइफ का अनुभव, 1000 जन्म पहले तक, 1000 जन्म बाद तक, 10,000 जन्म पहले तक, 10,000 जन्म बाद तक, अनंत काल से अनंत काल तक, उसको एक्सपीरियंस करना है, इनफाइनाइटनेस को एक्सपीरियंस करना गॉट इट, मतलब मुझे मेरे इनफाइनाइटनेस को एक्सपीरियंस करना है। मैं गलत ट्रैक पे चला गया था। है। आई हाँ। अंडरस्टैंड नाउ परफेक्टली। और और कि ठीक है, ठीक है, गॉट इट। इसका प्रूफ क्या है कि यहां पहुंच रहे हो? जैसे ही वो कांटेक्ट करोगे ना, गूस बम्स आएंगे शरीर में। मतलब हाई लेवल की करंट दौड़ने लगेगी। सामने लाइट के स्ट्रिक्स आने लगेंगे, लाइटनिंग की तरह। और ओके। मन करेगा कि ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, इसको छोड़ू। क्योंकि शरीर हमारा उस हाई लेवल के कनेक्शन, हाई लेवल की एनर्जी के प्रति रेडी नहीं है। तो वो कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करेगा बॉडी। लेकिन आपको तोड़ना नहीं है। जब आप उसको होल्ड किए हुए हो, तब आपका पूरा नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन हो रहा है। हम्म। समझ गया, ये कंप्लीटली डिफरेंट डायमेंशन है जहां आप समझा रहे हो मेरे को। हाँ अ, अब समझ में आ रहा है कि ठीक है, अब मैं इसको सेकंड टाइम अटेम्प्ट करूंगा, और सेकंड टाइम बिल्कुल आपने जैसे बताया उसी तरीके से उसको महसूस करूंगा। आपने बता दिया, आप उसको कहीं से लाना तो नहीं है, मुझे इंपोर्ट तो करना नहीं, ऑलरेडी अंदर है, तो उसको केवल फील करना है, बाहर से लाना हाँ ही नहीं है मेरे। जी हाँ। जी, मैं समझ गया। परफेक्ट। उसको फील करने का फर्स्ट स्टेप क्या करना है? कि मेरा पावर टू क्रिएट मेरे अंदर कहाँ है, कौन क्रिएट कर रहा है मेरे अंदर। हम्म। तो वो दरवाजा खोल के अंदर घुस जाना है। तो वो जी दरवाजा जी। जब खोलोगे, तो पहले फिजिकल मैन को देखोगे। फिर उसके हम्म। बाद मेंटल वर्ल्ड को क्रॉस करके स्पिरिचुअल मैन को देखोगे। और हम्म। उसमें टच करोगे इन्फानाइट एनर्जी को, इन्फानाइट पावर को, इन्फानाइट लाइफ को, इन्फानाइट नॉलेज को। तो शरीर कांपने लगेगा। वह इतना हाई वोल्टेज करंट होगा, इतना इतना पावर होगा कि ये साधारण शरीर उसको ले नहीं पाएगा। लेकिन हमको भरोसा रख के, फेथ रख के वो कनेक्ट मेंटेन करना है, वो कांटेक्ट मेंटेन करना है, ताकि हमारा जो एनर्जी हैंडलिंग का लेवल है वो हाई हो जाए। जी, बहुत बड़ी बात है ये। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। आपने बहुत बड़ी बात समझाई है। ये बात ग्रास करना भी इतना इजी नहीं है। आप बहुत ऊंचे लेवल की बात कर रहे हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मेरे से जितना होगा। आई विल ये ट्राई टू एक्सपीरियंस। हाँ, आप ये आप इजी बहुत है। बड़ी बात कर रहे हैं सर। बहुत ऊंचे बता लेवल, रहा बहुत हूं। हाई लेवल की बात है ये तो। नहीं, हाई लेवल की लगती है लेकिन है नहीं, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेबल है। हम्म। क्योंकि मैं हमारा कोशिश अनुभव करूंगा। नहीं है, इसलिए हमको हाई लेवल की लगती है।
जी जी, मैं सिंसियरली कोशिश करूंगा। इसको मैं आज रात को दोबारा रिपीट करता हूँ, पूरी कोशिश करूंगा मैं इसकी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। वेलकम। एंड रियली मतलब आपको बोलने के लिए थैंक यू वर्ड्स भी कम पड़ रहे हैं मेरे को। यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक। जो भी आप कर रहे हैं ना, बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। Welcome, Sushil. Yeah, Guna, what did you experience? Yeah, I was in touch with 1 minute. Huh? You were in touch with? Yeah, I was in touch with the source of power and source of creativity, source of perception. No, how do you In know it fact, was source of power? How do you know it was source of power? see, it normally, you see, what I have experienced is I was able to visit some of the times in my life wherein I was able to do something extraordinary, and I know very well I wouldn't have done it given my regular state of mind or whatever No, state of being. no, Guna, you are speaking from memory. I want you to be in the present moment, and share what did you come in contact with to Yeah, whom you are yeah, calling source of power. sure. Huh? I want you to leave memory part and be in the present. And what did you actually come in contact with, which you are calling source of power? Source of See, that power is is what I'm God. saying. Okay, source of power Yes. is God. Source of power is Mahashakti, Kali herself, Mahakal, Mahakal. So did you Hmm. touch Kali? No, no, I did not touch Kali. Yeah, so then you were not at the source of power. Source of power is infinite power. Source of knowledge is infinite knowledge. Nobody can have more knowledge than that, ultimate knowledge. Okay, so it is in the spiritual domain, it is not in the Prakriti domain. It is in the Purusha domain, outside Prakriti, outside space and time. And what can go out there is probably only your thought. And it is in the present. There are no memories there. If there are memories there, then that is again Prakriti. Only mind and matter is Prakriti. Beyond mind is not Prakriti. Prakriti ends with the mind. या अशोक जी, आपने क्या एक्सपीरियंस किया? तो सर, मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसके बताने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्या अभी हम कर सकते हो? आप शॉर्ट में बताइए, लंबी स्टोरी मत बनाइए। नहीं, लंबी स्टोरी नहीं बनाता हूँ मैं। जस्ट when I've started 2 minutes, I'm taking stable to me because whatever knowledge you has given before this was very high, and वो सब फ्लो इतना ज्यादा था कि वो थी तो सब थोड़ा सा ये हुआ था। फिर 2 मिनट मैं बिल्कुल शांत रहा, कुछ भी सोच, माइंड को स्टेबल किया। फिर माइंड से मैंने देखा कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टारगेट विच आर इन माइंड, और तो मैंने देखा कि मैंने माइंड ने देखा कि रियलिस्टिक मटेरियल स्टेज में वेयर आई एम, and then I'm then when I'm coming to know the stage, at the stage where I am, then I'm asking what is my target. And all your instructions of the quantity and all that factors I have considered, and that I mean is that for the financial year 2024-25, our target is for uh, 24 lakhs, and नहीं we have already lost. नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। योर माइंड हैज रुकता हूँ। गॉन ऑल ओवर द प्लेस। मैंने आपसे ये कहा कि आपको ये देखना है कि आपके अंदर पावर कहाँ क्रिएट होता है, आपके अंदर इंसाइट कहाँ क्रिएट होता है, आपके अंदर परसेप्शन कहाँ पर आ रहा है।
और फिर आपको देखना है फिजिकल मैन जो कि आप हैं, जो ऊर्जा लेता है हवा से। प्राण बोलिए, ऑक्सीजन बोलिए, एयर बोलिए, शरीर उससे ऊर्जा ले। और फिर मैंने कहा आपसे कि अब आप जाइए इनविजिबल मैन पे, ये स्पिरिचुअल मैन पे। और वो स्पिरिचुअल मैन जो है, उसके यहाँ पे सब कुछ इनफाइनाइट होता है। स्पिरिट में सब कुछ इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट पावर। और आप उसको अपने अंदर फील करिए, उसके साथ टच करिए, कनेक्शन लीजिए। आपके अंदर आत्मा है कि नहीं है? है सर। विदाउट आत्मा आ, तो कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, किसने बताया आपको विदाउट आत्मा आप रह नहीं सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, जो हमने आज तक जो हमारे संस्कार है वो हम हमें ये बताते हैं कि यस, आपके शरीर में, ये शरीर आपका नहीं है, आत्मा शरीर के अंदर है, और जो चिरंजीव है, इतना कंसेप्शनली बाय द हमें पता है कि हाँ, जो आप पढ़ा है, आपने सुना है। आपने कभी अपने आत्मा को छू के देखा है? रियलाइज किया है कि आपके अंदर है कि नहीं? तो वो अनुभूति, अब उसको टच किया, मतलब मैं जब भी सोचता हूँ तो मैं अंदर से सोचता हूँ, जो भी सोचता हूँ कि जो भी मैं रियलिटी में लाना चाहता हूँ, तो वो पहले मैं आत्मा से मेरी बात होती है, एज अ मुझे एज अ माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये तो मेरा हमेशा झगड़ा चलते रहता है नहीं नहीं, आप कि आप जिसको आत्मा बोलते हैं वो आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा बात नहीं कर सकती। मतलब आत्मा म्हणजे आई एम इंडिविजुअल नो सर। सो एंड व्हेन आई एम एन इंडिविजुअल, दैट हाँ, इज आत्मा, नहीं एंड एट द सेम नहीं टाइम नहीं 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 आत्मा नहीं हैविंग द। नहीं 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 नहीं। आप ओके जो ओके है, सर, सॉरी। आप जो है तीन चीजों के बने हुए हैं। एक आपकी आत्मा, एक आपका चित्त बोलिए, मन बोलिए, और एक मन। वस्तु बोलिए, मैटर बोलिए। आप सोल माइंड मैटर के कॉम्बिनेशन है। आप हैं, हम हैं, जितने जीव हैं, जी सर। सबके अंदर सोल है, सबके अंदर माइंड है, सबके अंदर मैटर है। ये शरीर जो मेरा दिख रहा है ये मैटर है। मेरा माइंड आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप सो माइंड से कांटेक्ट हाँ, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसे? ठीक। माइंड रीजनिंग करेगा, माइंड थिंकिंग करेगा, माइंड मेमोरी रिकॉल करेगा, माइंड फीलिंग देगा, माइंड में इमोशन आएगा। इससे आपको मालूम चलता है कि माइंड एक्टिव है। माइंड में तीन हिस्से होते हैं, एक बुद्धि, एक अहंकार और एक मानस। तीनों का अलग अलग फंक्शन है। लेकिन जो आत्मा ओके। है, जहां माइंड खत्म होता है वहां से आत्मा, आप बोल सकते हैं कि वहां से चालू होता है। माइंड और मैटर प्रकृति के अंदर है, स्पेस और टाइम के अंदर है। लेकिन जो ओके आत्मा है वो प्रकृति के अंदर नहीं है, बाहर है। ओके आपकी आत्मा साक्षी है, वो प्रकृति का नाच देखती है। आपकी आत्मा वो भोगने वाली है, जो प्रकृति का भोग भोगती है। आपकी आत्मा वो कंट्रोलर है, जो प्रकृति को कंट्रोल करती है। मैंने आपसे ये ओके पूछा कि आपने अंदर जाके उस आत्मा जहां पर ऑपरेट हो रही है उसको टच किया कि नहीं किया, उसको एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया? नहीं क्योंकि क्या, वो अब अनंत है। ओ नहीं नहीं किया सर। टू बी हाँ, तो फ्रैंक, जहां अभी मैं पर, रात को और ट्राई करूंगा। हाँ ट्राई अब मैं करिए, ट्राई जहां करता हूँ पर रात। आपकी आत्मा हाँ है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहां अनंत है। ज्ञान अनंत है, शक्ति अनंत है उस जोन में, आत्मा में नहीं। यस आप सर। जब उस जोन में एंटर करते हैं, स्पिरिचुअल जोन में, स्पिरिचुअल जोन मतलब रिलीजियस जोन नहीं। नो सर, आई अंडरस्टैंड बिकॉज एवरीथिंग इज यूनिवर्स इज इन मी, दैट इज द आवर कंसेप्ट, बिकॉज जो बाहर है प्रकृति में वो सब मेरे अंदर है। अरे और वो कैसे आत्मा मालूम और आपको? वो, वो आपको कैसे नहीं नहीं मालूम? नहीं किसी ने बोल दिया, आपने मान नहीं नहीं, लिया? उसकी तो अनुभूति लेनी है ना सर। ये कंसेप्ट जो है, जो आप जो हम जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो उसकी अनुभूति लेने के लिए ही तो इतने सारे एक्सरसाइज एंड वो सब चल रहा है हमारा, जो डेली हाँ, हम जो कर रहे हैं।
वो उसी के लिए द पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस एक्सरसाइज एंड ऑल दिस एक्टिविटीज एंड ऑल द टाइम गिवन एंड सब thinking and all is going to for that purpose only. Whether that atma, whether that what is in universe is in inside me and that is ananta, definite indefinite, ये इसका तो अनुभूति लेनी है ना सर. तो इसके प्रयास एक एक वो स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं. बट वी आर वेरी इनिशियल स्टेज नाउ एंड वी आर देयर इज अ मे बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थिंकिंग एंड नॉलेज एंड सो समथिंग इज लाइक दैट. ऐसा कुछ हो रहा है. तो ठीक है, इट मे बी दैट. तो आप इसको रात में करिए और कल के हाँ, सेशन में आज एक तो बार करूंगा सर मैं. बताइएगा कि क्या एक्सपीरियंस हुआ। So, एक last question, sir. When हाँ, I'm trying to enter in the infinite knowledge and infinite things and talking, so is there any purpose required to reach there? क्या किस लिए जा रहा हूँ मैं उधर? Why? What? ये question आएगा कि why I'm आप going there? Which आपके power I require? आपके बैंक अकाउंट कितने हैं? मेरे बैंक अकाउंट 6-7 होंगे सर. 6-7 होंगे। वो टोटल बैंक अकाउंटों में कितना रुपया है? 7 में, 6 में? देखना मान पड़ेगा मैं. लेते हैं एक्स, एक्स मान लेते हैं, एक्स है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल. ठीक है, अगर आपको कुबेर के खजाना की चाबी दी जाए तब आपका ओके. बैलेंस कितना हो जाएगा? इनडेफिनेट इन्फिनिट मतलब उसका उसका कोई अनंत है. वो उसका कोई कोई मर्यादा ही नहीं उसकी कोई. हाँ, अब आपको कुबेर का खजाने के, मान लीजिए मैंने आपको चाबी दे दी, आप क्या करेंगे? ओके, लेट मी नाउ. ये अब अभ्यास का विषय है. क्योंकि ऐसा तो क्योंकि अगर सपोज मैंने 10 दिन से खाना नहीं खाया और मेरे सामने एक पूरी एक राशि लगा दी पकवानों की और सब खानों की. तो आई एम कंफ्यूज. तो शुरू कहाँ से करूँ मैं, मतलब स्टार्ट फ्रॉम. हाँ, तो जब आपका आत्मा से कनेक्ट होगा ना, ऐसा ही फीलिंग आएगा जो पहले कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। ओके सर. समझ आज में रात को मुझे. तो हाँ सर. और वो वो रात में तो वो कोई टाइम नहीं. नहीं नहीं, सुनिए, वो कुबेर का खजाना, हम्म. वो मान के चलिए कि अनंत की शक्ति, अनंत का ज्ञान और अनंत की दौलत, ये तीनों आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? तो फिर इस इस लाइफ में कुछ मिलना मिलना मिलने की कुछ कुछ मिलना बाकी नहीं रहा. तो जब आप वो ये एक्सरसाइज जो आज समझाई गई है इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो अनंत ही मिलेगा। और अगर आपको अनंत नहीं मिलता है मतलब आपके प्रोसीजर में कोई मिस्टेक हो गया। यस सर, आई एम नाउ टोटली अंडरस्टैंड. बिकॉज यस, आज और मुझे रात को कोई 15 मिनट की लिमिट में नहीं रहेगी. मैं जरा जितना डीप जा सकता हूँ आई कैन गो, कि ज्यादा टाइम दे सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ कि, और मेरे कुछ भटके हुए विचार है उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता हूँ. आप जब वहां पर पहुंच जाएंगे ना, आपके विचार सब लापता हो जाएंगे, यस सर. जब आपका तक होश मतलब उड़ जाएगा। जब तक मेरे विचार लापता नहीं होते तब तक मैं वहां नहीं पहुंचा हूँ. दैट इज द की मैं ऑफ मैं वही वेदर तो आई एम बोल रहा रीचिंग हूं, जब आप वहां पहुंचेंगे आपका होश उड़ जाएगा। होश उड़ जाएगा मतलब आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सब फ्यूज उड़ जाएगा। वो इतनी शक्ति है, अनंत की शक्ति है। यस. वो यस. ऐसा हो गया कि जैसे आपने दोनों हाथों में 31,000 वोल्ट पकड़ लिया हो। So no fuse will remain हाँ working condition afterwards. हाँ, Mind लेकिन and subconscious mind. लेकिन लेकिन वो जो शक्ति है अनंत की, वो आपके बुद्धि के द्वार से जाएगी। आपके बुद्धि को बुद्धि है कि कहां तक रोक के आपको वापस खींच लेना है। ओके. समझ तो में आया आपको? मेरे बुद्धि का जितना विकास हुआ है वही लेवल तक मैं पहुंच पाऊंगा विद टू दैट पावर. वही लेवल तक पहुंच पाएंगे, ये ठीक है, लेकिन क्योंकि हाँ सर. आप इस समय एक्शन कर रहे हैं तो हाँ. अंदर चले जाएंगे और भी। ओके सर. जहां तक आपकी सहने की शक्ति है उस ऊर्जा को, ओके सर. तब तक।
और अगर आप भी हठी बन के विल पावर अपना जगा के खड़े हो जाते हैं वहां पर, तो जब Yes, sir. निकलेंगे वहां से, जैसे वो दुर्योधन का शरीर होने वाला था महाभारत में, जो कि कृष्ण ने होने वज्र का, दी, वज्र का, हम्म, वज्र का। वज्र का शरीर, हाँ, वज्र का शरीर बन। हाँ, तो अंदर अगर आप वज्र वज्र की तरह खड़े हो जाएंगे, तो जब बाहर आएंगे तो दूसरी दुनिया में होंगे, दूसरी दूसरी शख्सियत होंगे आप। टोटल डिफरेंट अशोक कुलकर्णी इज देयर यस, प्लस इनसाइड, आपको अब इनसाइड। मालूम पड़ गया कि कहां से मिलता है। ये बाबा लोग के पास नहीं मिलता है, किताबों में नहीं मिलता है, मंदिर मस्जिद में नहीं मिलता है, फोटो में नहीं मिलता है, पूजा पाठ में नहीं मिलता है। यस सर, क्योंकि क्योंकि ये सब बाहर हो रहे हैं प्रकृति में। यस सर, प्रकृति को पार करके, प्रकृति की बॉर्डर है बुद्धि, बुद्धि को पार करके आपको एंट्री मारनी है। यस सर, ठीक है, यस सर, चलिए तो फिर आज एंड करते हैं। किसी का कोई यस सर। क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, और इट्स वील एंड। नो गुना क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? Yeah, so fine. Thank you. We'll meet थैंक tomorrow again, same time, 7 p.m. थैंक यू सर।